The metal carbonyl sigma bond is formed by donation of electron from lone pair of carbon in CO to empty d orbital of metal. यहाँ तक लिखिए, raise your hand once you're done writing. So how does the metal carbonyl bond, the sigma bond, how does it form? We have metal, and metal का जो Z square वाला होता है, it forms a bond with the carbonyl like this. ऐसे समझ लीजिए, carbon triple bond O. There is a lone pair. Now this lone pair donates the electron density towards the empty d orbital of metal, leading to formation of metal and carbonyl sigma bond, है ना? And I'm representing the sigma bond as the sigma molecular orbital CO. So this type of bonding or this type of overlap is the sigma overlap. Next, the metal carbonyl pi bond is formed by pi overlap of filled d orbital of central metal atom and antibonding of antibonding pi star of carbonyl. ठीक है? Now let me show how the bonding takes place. We have metal. So these are the empty d orbitals of, or rather the filled d orbitals of metal. In this we have electrons, है ना? And a similar type of symmetry will be present if you remember the pi overlap. अगर आपको याद करें ना, don't write now. When the pi overlapping इस तरह से होती है, and in molecular orbital theory we know that pi जो बनता है इस तरह से, this is the pi bonding and the pi anti bonding looks like this. Yes or no? You remember this? हाँ, ठीक. So the same way we have the pi anti bonding of carbonyl. Carbonyl has triple bond with oxygen atom, so it will be obviously having pi bond, and those pi bonds, they have their anti bonding like this.
ठीक है. So now you can see that the filled d orbitals can overlap with the anti-bonding like this, leading to formation of a pi overlap between metal and carbonyl, and the pi overlap will look something like this. ठीक है, यहाँ पे किन दोनों के बीच में हो रहा, we write that also. This is the d orbital of central metal atom. This is the pi star of ABMO of carbonyl. अब लिख लीजिए रेजर हैंड ऑन स्टूडेंट. Done. Now, right next. The metal to ligand bonding in metal carbonyls creates a synergic effect which strengthens the bond between metal and carbonyl. Strengthens the bond between metal and carbonyl. This type of bonding is called synergic bond. है ना. So what this is saying is that, see, देखिए दो तरह के बॉन्ड है ना. कार्बोनिल कार्बन इज गिविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द मेटल एंड फॉर्मिंग अ बॉन्ड. और उसी तरह से एक एक तरफ से हाथ कार्बोनिल ने बढ़ाया बॉन्ड के लिए, दूसरी तरफ से हाथ मेटल ने भी बढ़ा दिया. So there is, we can say that there is synergic effect. That means both carbonyl is trying to have a bond with metal, the metal is also trying to have a bond with carbonyl. तो दोनों मिल के जो बॉन्ड बना रहे हैं, that is why it is very, it's what's very strong, and hence CO it is having the strongest field ligand है ना. If you see the spectrochemical series, carbonyl carbon is having the largest CFSE also. ठीक है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. अब इसमें ना बहुत तरीके से सवाल कर सकते हैं, लाइक व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट है ना. तो इसमें सिग्मा और पाई दोनों आपको पता चाहिए. एमसीक्यू आ सकता है इसके लिए, रीजनिंग आ सकता है इसमें. ठीक है. एंड दे कैन आल्सो आस्क यू लाइक व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज बिटवीन
जो सिग्मा बन रहा है वो किन दोनों के बीच में बन रहा है, तो मेटल के डी ऑर्बिटल और कार्बन का लोन पेयर से बन रहा है ना। एंड द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड पाई स्टार ऑफ CO। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस कैन कम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। So, Yeah, tell me. so if they ask us question Hmm. from this bonding in metal carbonyls, and we have to describe the sigma overlap or pi overlap. हाँ हाँ We करेक्ट, have इफ दे आस्क to ना draw. ये, हाँ ड्राइंग आप कर लीजिएगा ऑब्वियसली, यू हैव टू ड्रॉ। Yes. ओके, देखिए मतलब इन जनरल ना आपको हम एक चीज बता रहे हैं, आंसर ऐसा लिखिए कि देख के लगे कि आपने केमिस्ट्री लिखी है। तो जैसे ही अगर आपने ऑर्बिटल्स बना दिया तो देख के समझ में आ रहा है ना आपने केमिस्ट्री लिखी है, ये सुनो। Yes, sir. सिमिलरली अगर कुछ पूछा है आपसे, they have asked us some question and if you can add a reaction in it, है ना, there is a reaction that you can write। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा, केमिस्ट्री का पेपर है तो रिएक्शन जरूर लिखें अगर कोई रिएक्शन है तो। अगर आपसे पूछे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं व्हाट इज रोजेनमेंट रिडक्शन, तो इंस्टेड इफ यू हैव लेस टाइम ऐसे तो दोनों लिख दे तो बेटर है, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ रोजेनमेंट रिडक्शन इट इज बेटर टू राइट द रिएक्शन इटसेल्फ। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, तो ये जनरल आइडिया हमेशा याद याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कि ऐसी चीज लिखिए जो देख के लगे कि वो केमिस्ट्री आपने लिखी है। ठीक है, जैसे लेट मी सी देयर इज वन, एक क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, इट वाज एन इजी क्वेश्चन, आई डोंट रिमेंबर इट नाउ, मेटल कार्बोनल्स में। हाँ, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, आउट ऑफ NH3 and CO which ligand forms more stable complex with transition metal and why, है ना, कुछ ज्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, दैट मींस अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो दैट इज कार्बोनिल। व्हाई? बिकॉज इट हैज बोथ द बॉन्ड, है ना, सिग्मा भी होता है उसके अंदर और पाई भी होता है, दैट इज द रीजन। मेक सेंस? Yes. चलिए, हाँ नेक्स्ट हम क्या लिखवा रहे थे? कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, हम तो, माई एक्सपीरियंस टेल्स दैट अभी तक जनरली 12th क्लास तक भी बच्चों को ना ये नहीं पता होता है कि कलर क्यों दिखता है, और लाइक व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाई डू वी सी कलर, हाउ डू वी सी कलर रादर आई शुड से। एनी आइडियाज है ना? कलर क्यों दिखता है? हम्म, व्हाई समथिंग इज येलो, है ना, व्हाई समथिंग इज रेड, Um, कैसे दिखता है ये भी बता दीजिए कम से कम, लाइक कैसे। as in like in food items, the हाँ chemicals हाँ present हाँ, बोलिए बोलिए। in food items में जो natural chemicals present होते हैं, हम्म, I think those are one of the major components of why there is a certain color to everything. हाँ दैट इज ट्रू, लेकिन देख अगर आपको कलर दिख रहा है मतलब कुछ ना कुछ उसमें से वेवलेंथ एमिट हो रहा है और आपके आंखों में पड़ रही है, राइट? Yes, of course. है ना, नाउ दैट मींस एवरीथिंग इज एमिटिंग सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जनरली जो कलर, जैसे आपको ना अभी जो स्क्रीन में दिख रहा होगा, दैट कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, तो जो स्क्रीन में दिख रहा है दैट इज नॉट द रेड कलर में आपको दिख रहा है, राइट? बट दैट इज नॉट Yes. एग्जैक्टली, इट इज रादर लाइट, इट इज रेड लाइट। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर कि कोई चीज लाइट है या कलर है? मेक सेंस? एक तो रेड लाइट हो सकता है ना, है ना, Yes, sir. एंड अगर रेड पेन से हम कॉपी में लिखें देन इट विल बी कॉल्ड रेड कलर, करेक्ट? थोड़ा सा आपको फर्क समझ में आ रहा है? लाइक रेड लाइट जो होता है ट्रैफिक में, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ठीक है, देन वी हैव ये रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर। इज देयर एनी डिफरेंस इन दैट?
उसके मैकेनिज्म में कैसे दिख रहा है हमको, क्यों दिख रहा है, उसमें कुछ आइडिया मतलब सोचिए जरा, इफ यू कैन थिंक, नॉट टेक टू मच टाइम, है ना, आप, आई विल नॉट कुक योर ब्रेन टू मच, ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे हम, थोड़ा सोच के अगर दिमाग लगता है तो कैन थिंक। Due to refraction of light. एक्शन आप ठीक, थोड़ा ठीक जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएट करते हैं कलर्ड लाइट एंड एक्चुअली कलर। जैसे जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, दैट इज आई एम सेइंग कि वो लाइट है। कैसे लाइट है? इफ यू टर्न ऑल ऑफ द लाइट इन योर रूम, यू कैन स्टिल सी द स्क्रीन, यस और नो? Yes, sir. बट अगर आप ब्लू पेन से अगर कॉपी में लिख रहे हैं और आपने लाइट बंद कर दी, तो क्या आपको वो ब्लू नजर आएगा, कुछ लिखा नजर आएगा? No, sir. नो। तो लाइट डज नॉट रिक्वायर अनदर लाइट, बट कलर रिक्वायर्स लाइट। जब तक लाइट नहीं है कोई कलर नहीं है, राइट? इफ देर इज नो लाइट, कैन वी सी एनी कलर? No, sir. राइट, बट वी कैन सी लाइट्स, है ना, रेड लाइट वो सब दिख जाएगा, बट वी कैन नॉट सी एनी कलर। अब होता है, दैट मीन्स लाइट इज अ प्रीरेक्विजिट टू सी कलर। मेक सेंस जाए ना, ये सुनो। Yes, sir. सो नाउ व्हाट हैपेंस, लाइट हिट्स द ऑब्जेक्ट। कलर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, नॉट फॉर मतलब रेड लाइट वगैरह की बात नहीं कर रहे, कलर के लिए। कलर कैसे दिखता है? तो लाइट हिट्स ऑब्जेक्ट एंड थ्री थिंग्स कैन हैपन। सबसे पहली चीज, जो ऑब्जेक्ट है इट एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट। करेक्ट? मेक सेंस, yes or no? Yes, sir. It absorbs all light. Therefore what will happen, मतलब जब उसने सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लिया तो कुछ तो उससे वहां से रिफ्लेक्ट होगा नहीं। मेक सेंस, yes or no, ना? Yes, sir. Nothing reflects back. Therefore object appears, which color, tell me? Yes, sir. If all the light is absorbed by the object, then the object will appear black. Uh, Make sense? yes, sir. Very good. Now another thing can happen, that the object absorbs nothing. ठीक है? Absorbs no light. That means all light reflects back. If all light reflects back, तो सारे लाइट का जो कॉम्बिनेशन होगा, it will appear white, yes or no? Yes, sir. Object appears white. Another है, some wavelength of light is absorbed and rest is reflected. ठीक है? तो जो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, देयर विल बी सम लैम्डा विच इज रिफ्लेक्टेड, एंड उसी का कॉम्बिनेशन आपको वही कलर देगा। देयरफॉर इट विल अपीयर ऑफ सम कलर, राइट? कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसका कुछ वेवलेंथ होगा ना, एंड द ऑब्जेक्ट विल बी अपीयरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर, जो उस वेवलेंथ का कलर होगा वैसे ही दिखेगा आपको। मेक सेंस, सुनो, समझ में आ रही बात? Yes, sir. ऑब्जेक्ट अपीयर्स कलरफुल, दैट मीन्स in order to in order for an object to have color, there should be
some absorption of light. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक लिख लिया आपने? नहीं. हाँ, लिख लीजिए आराम से. चलिए नेक्स्ट देखिए. अब जनरली हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें किस तरह से, अच्छा सीएफटी आपने पढ़ा है अभी तक? कि सीएफटी नहीं पढ़ा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ लिया? No, हाँ sir. गए ना? नहीं पढ़ा? वो जो पुराने छूटे हुए लेक्चर्स वो नहीं पढ़े हैं आपने? Crystal field theory. हाँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. Yes, crystal field theory. व्हाट? सॉरी? पढ़ा है. पढ़ा है ना? सो यू Yes, नो दैट देयर इज ईजी लेवल एंड टी टू जी लेवल, G. Yes, sir. राइट? लेट अस सपोज देयर इज वन इलेक्ट्रॉन हियर, है ना? कॉम्प्लेक्स का हमारे पास इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है. देयर इज दिस डिफरेंस is known as del O, and let us suppose we hit this complex with white light. We know that white light has Wib G or. Now let us suppose the yellow color, it the yellow color, it will correspond to certain lambda. That lambda will have certain energy. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Now that energy, let us suppose it corresponds to delta O. So as soon as the white light will hit the complex, this particular electron, it will get energy and it will jump to the EG level. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान सुनिए. Now after hitting the metal, after hitting the metal complex, the light is emitted, like light reflects back. When the light is reflected, what we get? We get violet, indigo, blue, not yellow, orange and red. A combination of all of these. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, इन सबका जो कॉम्बिनेशन होता है, इन सबका कॉम्बिनेशन होता है येलो. येलो बोल रहे, सॉरी, इन सबका कॉम्बिनेशन होता है वायलेट. एंड दैट इज, आई विल टेल यू हाउ आई गॉट दिस वायलेट. ठीक है, तो इन सबका कॉम्बिनेशन क्या होता है? वायलेट. दैट मीन्स द कॉम्प्लेक्स इट एब्सॉर्ब येलो लाइट, so the complex will appear to be violet. Make sense? Yes, sir. ठीक है, तो ये समझ में आ गया? इसको लिख लें अब हम लोग. Yes, I'm writing. हाँ, इसको लिख लीजिए जरा. एंड आई एम ऑल्सो राइटिंग हियर. इसके बाद ये लिख लीजिएगा. The color we see of a complex is due to the light absorbed by the complex, and reflected light is seen by us as the color of the complex. The d orbital electron absorbs energy and transitions to higher energy level from P2G to EG.
This transition is called DD transition. Next point. The frequency of light absorbed depends on the CFSE of complex. CFSE का मतलब हुआ डेल्टा O. एक सेकेंड, डेल्टा लिखने के लिए CFSE का मतलब हुआ डेल्टा O। ठीक है, तो डेलो के हिसाब से ही आपके पास डेलो के हिसाब से ही आपके पास ये होगा, द लाइट विल बी absorbed according to the delo. If the delo is higher, the light of higher frequency and lower wavelength will be absorbed, and if the delo is lower, then light of lower frequency and higher wavelength will be absorbed. अभी लिखाएंगे सारी चीजें। Let me know if you're done writing till here. अच्छा हाँ, थोड़ा सा आपको ये बता दें, this is what I am drawing is known as color wheel. कलर व्हील को डिवाइड करना रहता है इनटू 6 पार्ट। खैर जैसे भी ड्रॉ हो जाए, अब प्रीटी फाइन। So it has wib G your, ठीक है। Now what does it say? If let us suppose if the yellow light is absorbed, तो इसके उल्टे साइड वाला दिस विल बी द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। मेक सेंस? समझ में आया कैसे बताते हैं? ऐसा नो किसी में नहीं सर। नहीं समझ में आया? अच्छा देखिए, चलिए हम इसमें बता देते हैं आप लोग को। अब दिस इज आई मीन व्हाट आई कैन से, इस तरह से ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद ये चार्ट बना दिया गया, मतलब दिस कलर व्हील इज बीइंग मेड, कि देखा गया कि इफ द कलर वाज वायलेट ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द लाइट एब्सॉर्ब वाज येलो, इफ द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट वाज रेड देन द लाइट एब्सॉर्ब वाज ऑफ द ग्रीन कलर, इफ वाज ऑरेंज तो ब्लू कलर का लाइट एब्सॉर्ब किया हुआ था। तो उसी से ये कलर व्हील बना है। समझ में? लाइक कलर व्हील है, उससे हमको बस पता लगाना रहता है, अगर कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट वायलेट है तो इसका मतलब व्हाट लाइट इट इज गोइंग टू एब्सॉर्ब, येलो लाइट इट इज गोइंग टू एब्सॉर्ब। ओके। ओके, यस सर। तो थोड़ा सा आप अगर समझना चाहें तो थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कलर्स हैं, तो रेड को कैंसिल कर देगा ग्रीन वाला, ऑरेंज को कैंसिल कर देगा ब्लू वाला, बचा वायलेट। येलो तो अब्जॉर्ब हो चुका है, मेक सेंस? ओके यस सर। जैसे ऐसे समझिए ना कि व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में सारी कलर्स होते हैं, वायलेट इंडिगो ब्लू सभी कुछ होता है ना। अब जैसे वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, दीज आर ऑल आर व्हाट आई कैन से शेड्स ऑफ ब्लू ओनली, राइट? यस सर। वायलेट, देन वी हैव ग्रीन, उसके बाद ऑरेंज,
So yellow, orange and red, these are all what I can say, like orange और red को तो हम बोल सकते हैं like these are just shades of red only. Green and yellow में आपके पास transition मिलेगा. Make sense? Yes, sir. तो obviously बात है, there are some colors which are cancelling each other. That is why इन सारे के combination से आपको क्या मिलता है? White light मिलता है. That means for sure violet is cancelling some part, yellow is cancelling some part, green is also cancelling some other parts. Make sense? Yes, sir. है ना? तो अब देखिए जरा, if yellow has been absorbed, what we are remaining with? We are remaining with orange, red, violet, blue and green. तो रेड को कैंसिल करने के लिए ग्रीन है, ऑरेंज को कैंसिल करने के लिए ब्लू है, वायलेट को जो कैंसिल करता है येलो, वो तो एब्जॉर्ब हो गया, तो वायलेट इस वजह से हम लोग को दिख रहा है. गॉट इट नाउ? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड del O is higher, therefore light of higher energy, higher frequency and lower wavelength is absorbed. In weak field ligand, ये समझ में आया बात? Does this make sense? Yes, sir. Del O is smaller, therefore light of lower energy, lower frequency and higher wavelength is absorbed. Copy this down, raise your hand once you're done. I had a question. Compare the lambda of आप इतने से क्लास नहीं आ रहे थे, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी क्या? Yes, sir. I have a throat infection. How is it now? I don't know. It's not better. It's not better. No. So, I mean, like, are you having difficulty in speaking or swallowing? yes, Oh, it's just you stay in Riyadh, right? yes, sir. रियाज में तो आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम यार, मतलब है ना? Yes, sir. This मतलब time, yeah. दिस टाइम इट इज सीवियर आई गेस फॉर यू, बट आई थिंक जनरली मतलब हर साल ठंड के मौसम में क्या हमको लगता है इन जनरल भी साल भर ही बच्चों का जो गला है वो तो खराब ही रहता है. Yes, sir. It's the flu season. इट्स वेरी ड्राई. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन. Maybe. रियाज बहुत अजीब सिटी है, लेकिन आई लैंडेड ऑन इन रियाज लाइक आई वाज इन रियाज इन दिस फरवरी, हाँ दिस फेब ओनली, and I landed around 12 noon and तो एकदम धूप, ठीक है, वो एकदम पूरा धूप एकदम चमक रहा है, आंख एकदम एकदम बाहर एयरपोर्ट के बाहर निकल के आंख ऐसे बंद हो जा रहा है, इतना धूप और इतनी ठंडी हवा चल But रही ऐसे है. तो रहेगी. सारी वर्ड्स है ना. सारा डेजर्ट है ये, तो डेजर्ट की ठंडी भी अलग है. हाँ वही तो, मतलब And इतनी इतना धूप भी है और लेकिन एकदम ठंडी हवा चल रही है, लाइक वेरी
चिलिंग टाइप ऑफ, जो तुम चिल्स नहीं दे देते हैं, लाइक दैट टाइप ऑफ विंड इज ब्लोइंग एंड पूरा धूप है और पूरा शहर ब्राउन है, एवरीथिंग इज ब्राउन, एक घर है इन डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन और कोई और कलर है ही नहीं वहाँ। यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए जिस था आर्किटेक्चर। हाँ दैट इज ट्रू, मतलब आई एम नॉट, मतलब हम ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, जस्ट फीलिंग एन ऑब्जर्वेशन। एंड इट्स 346, ये इंडियंस जाके एकदम सऊदी बन जाते हैं, वाना भी सऊदी हो जाते हैं, पूरा डिफेंड करने लगेंगे बिल्कुल। अब हमारे इंडियंस हर जगह है दुनिया में। हाँ दैट इज ट्रू, इंडियंस ने ना And अपना ये बना लिया है, adapting. वर्ड्स है ना। We're very good at adapting. हाँ, वेरी गुड एट अडेप्टिंग। No, who I was listening to, they were saying on something on the lines that India never attacked, na? Like in history, you will not see like Indian going out and attacking a particular region and ruling there, right, Zaina? Yes, sir. Yeah, na? So, but in the like in this century, if you see, mm, we had a PM of Britain who was of Indian origin, right, Rishi Sunak. Yes, yes, I know. And even there is one guy who was on the presidential race in USA also. His name is Vivek Ramaswamy. And what else? Like there are a few people who has from Indian origin. Like Kamala Harris was, she's also Indian origin. She was vice president of USA. Yes, So sir. they were saying like we have approached the legal way to rule everywhere. अटैक नहीं करेंगे, लीगली वी विल गो देयर एंड देन वी विल रूल। आई थिंक इवन स्कॉटलैंड में भी जो द हेड ऑफ स्टेट है, ही इज आल्सो पाकिस्तानी, तो बेसिकली मतलब इफ आई थिंक ऑफ 100 years ago it was India only, no? So that too, where Because else? हम ही colonize हो गए थे for 200 years. हाँ, we were colonized, that is true, but now we are legally colonizing, you can say, जाके वहां पे पीएम ही बन जा रहे सीधा। हाँ, लेकिन they have उनकी citizenship and the rights of their हम्म। people comes first. So I wouldn't say they put us Indians before people of their country. हाँ बट स्टिल, लेकिन मतलब एक आप जो बाइडेन को देखिए, कमला हारिस को देखिए, तो थोड़ा अपनापन तो कमला हारिस में दिखेगा ना। Hmm. दैट आई मीन दैट्स I guess ऑब्वियसली इट that इज नॉट, many of the दे डोंट people इवन are थिंक दे आर इंडियंस। आई मीन कमला हारिस को भी नहीं, मतलब दे डोंट थिंक दे आर इंडियंस ना, मतलब आई एम जस्ट exact. सेइंग, जस्ट अ जोक that Indians go everywhere and then they colonize them legally. चलिए, so here the question is saying compare the lambda of light absorbed by this complex and this complex. Now if you see these complexes, everything is same other than the ligands, है ना? So if I compare the ligand of, let me say this is the first one, this is the second one, this is the third one. If I compare the delta O of the ligands, then C will be having the highest delta O because it is most strong field in the spectrochemical series, followed by C क्यों लिख रहे हैं हम, 3 लिखा है तो 3 लिखते हैं ना। 3 is the most, followed by 2 and then followed by 1, and hence the lambda, अच्छा del O के बाद देखिए, यहाँ पे देखिए, del O अगर ज्यादा है तो लैम्डा कम करेक्ट, ये सुनो, Yes, sir. है ना? तो उल्टा कर देंगे बस इसको, लैम्डा के लिए 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1, मेक सेंस? Yes, sir. चलिए जल्दी लिखिए इसको, देन यू विल डू आइसोमर्स। स्कूल चल रहे हैं आपके अभी? Yes, sir. We have almost finished the portion. अच्छा, ऑलमोस्ट फिनिश द क्वेश्चन इसको।
ऑलमोस्ट में मतलब कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? अभी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अच्छा, कोऑर्डिनेशन इज ऑनगोइंग। will be done by next week. And आपका यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स बचेगा, आई गेस, राइट? Biomolecules यहाँ पर yes है ना, yes बायोमोलिक्यूल्स तो यहाँ नहीं किया है हमने। हाँ, बायोमोलिक्यूल। इज देयर एनी अदर चैप्टर दैट इज रिमेनिंग फॉर यू? एक बार आप देख लीजिएगा थोड़ा सा ना, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर कि हमने आपको, बिकॉज यू शिफ्ट, आई मीन आपका बैच चेंज हुआ था ना। हाँ, जाइनाटल में। I think just biomolecules and polymers. अरे पॉलीमर्स नहीं है सिलेबस में भाई, पॉलीमर्स पढ़ा रहे हैं क्या आपके स्कूल वाले? पढ़ा दिया पॉलीमर्स पढ़ाया आपके स्कूल ने? yes sir but I mean क्या? I think it's just because we'll be attempting competitive exams so अच्छा, since जेई it's के a लिए। अच्छा, yes जेई sir के लिए, जेई। syllabus जेई, ऐसे ही पढ़ा दिया ऊपर से ठीक ठीक, जेई के लिए, हाँ, दैट मेक्स सेंस। लेकिन जेई में भी अब आई डोंट नो, आई एम नॉट अपडेटेड विद द जेई सिलेबस, लेकिन नीट में तो नहीं है पॉलीमर्स। खैर, डेंटल हियर। yes sir व्हाट स्कूल डू यू गो टू? आया है sir अच्छा। अच्छा, वहाँ पे पढ़ाते हैं ये सब? कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाइक दे गिव यू लाइक देयर इज सम एसआईटी प्रोग्राम, या फिर क्या है? लाइक स्कूल टीचर्स ही पढ़ा रहे होते हैं आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का भी? हमें नहीं पढ़ाते we don't have coaching here सो बस तो फिर CBSE पॉलीमर्स पढ़ा सीबीएसई पढ़ाते हैं, एंड देन लाइक ये जो पॉलीमर्स आपने पढ़ा है उसको ऐसे ही बस टीचर ने मतलब टाइम था तो पढ़ा दिया टाइप से? I think ऐसे ही पढ़ा दिया because last year we did not do any of the deleted syllabus ओके, फाइन, ऐसे ही पढ़ा दिया, फाइन। बाय द वे, यू हैव बायोलॉजी और मैथ्स? math ओके, गुड। राइट, कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different chemical and physical properties। ठीक है। So isomers, what are isomers? These are compounds which have, they have same molecular formula, but their chemical and their properties are different, है ना? chemical हो, physical हो, जो भी हो, their properties are different। Now isomers can be classified into two different categories: the isomers which have difference in the connectivity of atoms, those isomers are known as structural isomers, and the isomers which have their difference in the arrangement of atoms, not on the connectivity, connection same है सबका, but arrangement is different, those isomers are known as stereoisomers। So there are two isomers that we have to learn: structural isomer and stereoisomers। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। Structural isomer, they differ in structure or networking of atoms। एटम्स का जो नेटवर्क हो ना वो अलग हो, लाइक कनेक्टिविटी विल बी डिफरेंट ना, ये किसी और से लगा, ये किसी और से लगा हुआ है ना। इन वन ऑफ द कंपाउंड सी इज अटैच्ड टू ए, इन अनदर कंपाउंड सी इज अटैच्ड टू बी में भी, है ना, उस तरह का कनेक्शन डिफरेंट होगा। विल सी इन डिटेल। स्टीरियोआइसोमर्स दे differ in the arrangement of
of atoms in space. जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, we have four structural isomers that we have to study. Ionization isomer, second is hydrate isomer, third one is coordination isomer, fourth one is linkage isomer. Here the first one is geometrical isomer, second is optical isomer. Done. Write the first one, structural isomers. Structural isomer, structural isomers. Structural isomers में first we have to look at ionization isomer. What does ionization isomer give? Tells us about, or like what will be the difference? Is it gives different ions in solution. ठीक है, the definition हो गया. If they ask you, what is the definition of ionization isomer, you will write ionization isomers, they give different ions in solution. That means when you add in water, the ions that you are going to get will be different. Now how to identify it? Then identification का तरीका है contains anionic ligand and anionic counter ion. Counter ion याद है ना? Yes, sir. ठीक है, so a compound, a complex which has anionic ligands and anionic counter ion, it will show ionization isomer. ठीक है, बताते हैं कैसे. लिख लिया यहाँ तक आपने? Yes, sir. ठीक है. Let's suppose you have CO NH3 whole 5 chlorine and outside we have SO4. Here we have CO NH3 whole 5 SO4 and outside we have Cl. Now if I add this compound to water, then what will I get? I will get CO NH3 whole 5 chlorine, यहाँ पे 2 positive, and another ion that I will get is SO4 2 negative. यहाँ पे will get CO NH3 whole 5 SO4 positive, and we'll get another ion that is chloride ion that is Cl negative. अच्छा, by the way,
देयर आर टू वेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, है ना, दो आयंस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सल्फेट आयन एंड द क्लोराइड आयंस कैन बी आइडेंटिफाइड। कैसे आइडेंटिफाइड, किसी, ध्यान सुनिएगा ना, देयर आर टू रिएजेंट्स वी यूज when you add AgNO3 into this complex. अच्छा, by the way, can you see the formula is same, yes or no? Formula अलग तो नहीं लग रहा आपको? शायद लग सकता है, एक बार देखिए, is the formula same or different? जोर से Formula बोलिए, as in मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है ना, हाउ मेनी कोबाल्ट इन बोथ द स्ट्रक्चर्स, 1, हाउ मेनी नाइट्रोजन इन बोथ द स्ट्रक्चर्स, 5, 5, हाउ मेनी हाइड्रोजन इन बोथ द स्ट्रक्चर्स, 15, राइट, हाइड्रोजन। हेलो Zaina, are you there, Zaina? Hello? yes sir, am I audible? हाँ, yeah, you're audible. Hydrogens will be 15, right? Yes sir. How many chlorine in both the structure? 1, 1. How many sulfur in both the structures? 1, How many oxygen in both the structures? oxygen 4. So the molecular formula is same, है ना? Molecular formula Yes आपको sir. बताता है exact number of atoms that is present in a molecule. So both of them have same molecular formula, right? Now, when you react this particular complex with AgNO3, this complex, then it will not give you anything, yeah? No white PPT. But if you react this molecule with AgNO3, it means this complex, AgNO3, it has tendency to react with the chloride ions और यहाँ पे AgCl बन जाएगा, and AgCl it is white PPT. But if you react this molecule with barium chloride BaCl2, then it will give you BaSO4 because as sulfate है ना यहाँ पे, which is ionic in nature. So the ionic reaction happen, barium chloride से barium sulfate बन जाता है, BaSO4, which is white PPT. And if you react this molecule with BaCl2 barium chloride, तो क्लोरीन का BaCl2 का Cl से कोई रिएक्शन नहीं होगा, we have already barium chloride, so there will be no reaction or rather no white PPT, है ना? So by these type of reaction we can identify what type of counter ion is present in the complex. Does this make sense? Yes or no, please tell me. Yes sir. ठीक है, अच्छा दूसरी चीज देखिए, like they will ask you things like they will give you any one of them, है ना, या तो ये कॉम्प्लेक्स दे देंगे या तो ये कॉम्प्लेक्स दे देंगे, है ना। जो हार्ड सवाल आएगा, आसान सवाल क्या आएगा, व्हाट इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय दीज टू कॉम्प्लेक्सेस। तो आप देखिएगा जो अंदर और लाइक जो लिगेंड है अगर अंदर बाहर हो रहा है ना, दैट मींस इट इज आयोनाइजेशन आइसोमर, मेक सेंस, है ना। SO4 कभी अंदर, SO4 दूसरे वाले में बाहर है ना। तो इस तरह के केस में इट इज आयोनाइजेशन आइसोमर। नाउ द हार्ड क्वेश्चन, डज इट मेक सेंस, यस और नो, है ना? Yes sir. ठीक है। Now the hard question will be, they will give you this complex and they will ask you what type of isomerism can this molecule show. So for that what you need to do is you need to identify anionic ligand होना चाहिए और anionic counter ion भी. So you can see there is an anionic ligand here, anionic counter ion भी है, इस केस में भी there is an anionic ligand and anionic counter ion. Does this make sense, yes or no? Yes sir. चलिए, copy this down, raise your hand if you're done. Right, next, hydrate isomer या solvate isomer.
ठीक है, राइट हियर differ in the presence of H2O as ligand or merely as water of crystallization. आइडेंटिफिकेशन का तरीका, इफ देर आर टू कॉम्प्लेक्सेस गिवन, एक में पानी अंदर होगा और एक में पानी बाहर होगा, इन एंड आउट। ठीक है, जैसे आई एम राइटिंग थ्री कॉम्प्लेक्सेस, क्रोमियम H2O whole 6, H2O whole 6 and Cl3. Another complexes, chromium H2O whole 5, Cl, Cl2 outside and H2O. Now this dot H2O means water of crystallization. Make sense? Yes or no, Zaina? Yes, sir. Chromium H2O whole 4 and Cl2. Here you will have Cl dot 2 H2O. Okay. Now, in the first, second, and third compound, we have 1 chromium in all of these cases. Yes or no, Zaina? माइक ऑन करके थोड़ा यस नो बोल दीजिए अभी, बस, है ना? सही Yes, है, sir. हाँ या ना? इन ऑल द थ्री वी हैव 6H2O, या तो अंदर बाहर सब मिला के 6H2O है सब में। Mm, yes, sir. हाउ मेनी क्लोरीन इन ऑल ऑफ दीज थ्री? 3 क्लोरीन है ना सब में, देखिए जरा So, ओवरऑल। H2 including everything. हाँ हाँ, एवरीथिंग ना, दिस इज वन And I, मॉलिक्यूल, दिस इज वन मॉलिक्यूल एंड दिस इज वन मॉलिक्यूल, है ना, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, okay, yes. है ना? मेक सेंस, यस और नो? Yes, sir. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई द थ्री डिफरेंट थिंग्स? So when you react this with AgNO3, you will get 3AgCl and 0H2O ना, क्योंकि H2O तो बाहर है ही नहीं। मेक सेंस, यस और नो प्लीज? Yes, sir. है ना? So by the way, why 3AgCl? Because we have 3 chloride ions outside. Make sense? Yes, sir. यहाँ पे कितने AgCl मिलेंगे? 2. Very good. 2AgCl and how many water? There will be one water molecule. Yes, sir. Similarly, if I react this one with AgNO3, I will get 1 AgCl 2H2. and 2 water molecules. सही है? Yes. Let me know once you're done. Done, sir. थर्ड लिखिएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। Right here, differs in distribution of ligands. आइडेंटिफिकेशन का तरीका, occurs only when
coordination compound has anionic and cationic complex ion, यानी जो अनायनिक पार्ट होगा वो भी कॉम्प्लेक्स और कैटायनिक वाला भी कॉम्प्लेक्स है ना. फॉर एग्जांपल कोबाल्ट NH3 होल 6, chromium CN whole 6. This particular coordination compound can show coordination isomer, and its coordination isomer will be क्रोमियम के साथ आप ले आइए NH3 को, NH3 होल 6, एंड कोबाल्ट के साथ CN को. ठीक है. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड हैज चेंज्ड in the first, see, like the molecular formula is same. How many cobalt in both the cases? 1. How many chromium in both the cases? 1. How many nitrogen in both the cases? 12. How many hydrogen in both the cases? 18. How many carbon in both the cases? 6. So the number of atoms, है ना, number of atoms and the type of each atom is same here, but the distribution of ligand is different. In the first case, ammonia is distributed around cobalt. In the second case, ammonia is distributed around chromium. In the first case, CN is distributed around chromium, and the second case, CN is distributed among the cobalt. Make sense? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Right, next. Linkage isomer. लिखिएगा differs in point of attachment of ligand to central metal atom occurs only when ambidentate ligand is present in complex. So, by the way, what are ambidentate ligands? For example, we have a complex in which we have NO2, and in another complex we have ONO. In one complex we have CN, है ना. NO2 में आपके पास अटैचमेंट किससे होगा? नाइट्रोजन से. ONO में the metal will be bonded with oxygen atom, है ना. CN में it will be bonded with carbon atom, and if I have isocyanide तो इसमें नाइट्रोजन atom से bonded होगा, right? And if I have SCN, thiocyanate, and it will be, another one is NCS, which is isothiocyanate. So it's a point of attachment of ligand and central metal atom is different. But if you look at the ligands, N or do oxygen, N or do oxygen, N or C, N or C, NCS, NCS only. Make sense? Yes or no? The formula will be same. Yes. सही है. चलिए.
Done writing? Let me know once you're done writing. So this is for today, and in the next lecture, we are going to look at stereoisomerism or